In this video, we are going to look at how to improve your question selection when it comes to the VARC section. So VARC section, I'm sure you will know, is a very important section. In fact, it is the largest section when it comes to the CAT because VARC contributes 24 questions out of the 66 questions that we are expecting at CAT 2024, whereas the other two sections will contribute 22 and 20 questions respectively. तो यहाँ पे VARC का weight बहुत ज्यादा होता है. Now, if you want to know what all question types are there, what is the pattern like, what are the cutoffs like, हर percentile पे कितना score correspond कर रहा था for CAT 2020, 21, 22 and 23, आप ये वाला वीडियो देख लीजिए. इसके अंदर I have covered it extensively in terms of what it means to crack the VARC section. So all the kind of passages that you can get, all the kind of sources that are used to come up with these passages and so on and so forth, everything has been covered in this particular video. I'll put the link to this video in the description box below. तो ये वाला वीडियो देख लेना in case you are not very clear about what the VARC section looks like. अभी इसके अंदर अगर मैं सेक्शन की LOD देखूं, the level of difficulty of the section, if you have a look at it in terms of the RC part and the VA part, I have separately written these two because ये दोनों जो होते हैं ना वो distinct components होते हैं of this VARC section. Now if you look at the RC side of things, CAT 2020, 21, 22 अगर 3 साल से देख लो तो more or less जो pattern है वो same रहा है. CAT 2020 के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस आए थे. सो इन टर्म्स ऑफ द VARC सेक्शन देयर वर 26 क्वेश्चंस दैट वर प्रेजेंट इन CAT 2020, जिसमें से 18 क्वेश्चंस जो थे वो RC साइड से थे. एंड बाकी 2 साल में अगर देखेंगे या बाकी 3 साल में भी अगर देखेंगे तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द RC साइड ऑफ थिंग्स वाज 16. एंड इसके लिए CAT 2020 को अगर हम देखते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई देंगे. बट जो स्प्लिट है इन टर्म्स ऑफ इजी एंड मॉडरेट, दैट हैज रिमेन्ड मोर और लेस कंसिस्टेंट अक्रॉस CAT 2020, 21 एंड 22 ऑफ कोर्स. CAT 2023 अगर देखा जाए तो दैट वाज स्लाइटली इजियर कंपेयर टू CAT 2022 एज वेल, एंड उसकी वजह से जो कट ऑफ्स थे या जो स्कोर्स करेस्पॉन्डिंग टू द सेम परसेंटाइल्स थे वो स्कोर्स थोड़े से बढ़ गए. And in terms of the VA side of things, if you look at this particular table, you will see that every year out of the 8 questions that are asked, that has remained consistent. 2020, 21, 22, 23 हर साल में 8 questions आए हैं from the VA side of things. अगर आप वो वाला पार्ट देखोगे, more or less consistent रहा है in terms of the split according to the level of difficulty. तो हर साल 3 या 4 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आउट ऑफ 8 दैट कैन बी क्लासिफाइड एज इजी. इजी का मतलब यह है कि आपको अगर बेसिक टेक्निक्स पता है इसको सॉल्व करने की, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेल. In terms of the moderate questions, almost 2, 3, 4 questions can be classified as moderate, and in terms of the difficult questions, every year you will find 1 or 2 questions that can be classified as difficult. Now in terms of this one question that I am sure a lot of you will have, should we focus more on speed when it comes to solving this RC section or the VARC section, or should we focus more on the accuracy side of things? Now the first thing that you have to remember and tell yourself and almost promise yourself is that you do not have to solve everything. Just because आपके सामने 24 questions दिए हुए हैं और आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए अपना एक ओपिनियन है, that does not mean that you have an answer to each and every question. तो ओपिनियन होना इज डिफरेंट, आंसर होना इज डिफरेंट. सो इट डज नॉट मीन दैट नेसेसरीली यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन सिंपली बिकॉज इट हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू. तो ये सबसे पहली चीज ध्यान रख लेना, अपने आप को ये हमेशा बताना whenever you feel like gambling and solving a lot of questions. The second thing you have to understand in this particular context is speed और accuracy सब secondary हो जाते हैं. आपको पहले ये पता करना है कि आपका benchmark क्या है, आपको ये पता करना है कि आपकी level क्या है, और अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी level क्या है, you will be able to attempt these questions a lot more freely. क्योंकि मुझे पता है कि whatever happens, even if it is a difficult section, I will be able to get 6 questions correct. अगर ये मेरा benchmark है, कोई भी टेस्ट के अंदर मैं 6 क्वेश्चन तो बराबर सॉल्व करके आ जाता हूं या सॉल्व करके आ जाती हूं, तो मुझे पक्का पता है कि 18 मार्क्स इज समथिंग दैट आई कैन डेफिनेटली गेट इन एनी कॉन्टेक्स्ट. ये मुझे पता है. तो ये एक बेंचमार्क आप सबसे पहले पता कर लीजिए कि आपका बेंचमार्क क्या है, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट. Now, how do you find the benchmark? उसके लिए discipline has to be the key. This basically means that unless you are convinced कि यही मेरा आंसर है और यही सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस इस रीजन की वजह से गलत हैं, you will never be able to score well or consistently at the VARC section. तो आपको डिसिप्लिन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. अगर आप थोड़े से कैरिड अवे हो रहे हो बिकॉज वन इधर यू हैव अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स से आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए आउट ऑफ 24 और आपके पास 4 ही क्वेश्चंस बचे हैं. आप सोच रहे हो कि वर्स्ट केस क्या होगा, 4 में से 3 गलत हो सकते हैं या 2 गलत हो सकते हैं, बट मेरे 2 भी अगर राइट हो गए तो आई एम एट एन एडवांटेज. तो अगर आप ये थॉट प्रोसेस से बाकी के 4 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, देन इट माइट कोलैप्स एंड इट माइट लीड टू लार्जर ट्रबल्स फॉर यू लेटर.
तो ये सब चीजें मत करना। अगर आप कन्विंस्ड हो तो ही करना। अगर आपने 23 क्वेश्चंस भी किए हैं तो जबरदस्ती में वो 24th क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश मत करना, जस्ट बिकॉज यू हैव हर्ड समवन अटेम्प्ट सो मेनी क्वेश्चंस एट द कैट। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको एकदम डिसिप्लिन रहना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आंसर करने नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल आंसर मार्क नहीं करोगे, इट्स परफेक्टली ओके। आप 3 या 4 क्वेश्चन सही से आंसर मार्क करके आ जाओ, बट आपको 100% गारंटी होनी चाहिए कि यही 4 क्वेश्चन हैं जो आपके बेस्ट, इजिएस्ट और करेक्ट आंसर्स आप जिसको दे सकते हो। तो ये वाले आपके क्वेश्चंस जो वो आइडेंटिफाइड है। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन दी VARC सेक्शन, एटलीस्ट वेर इन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू वंडरफुल थिंग्स विद द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू विल हैव। Now, in terms of what needs to be prioritized, you need to prioritize accuracy first. Speed can be improved later. So what you have to do is you have to ensure that you are attempting every question correctly using the correct form of reasoning that is expected of you. Once you keep on doing this on a consistent basis, you will see that it is easier for you to also master speed and solve these questions a bit faster. So don't worry about speed at this point in time. Only go for questions that you firmly believe in are the correct questions that you should be going for, considering your knowledge, your expertise, the type of question, and the parameters that we are going to see a bit later. Then if you are not sure of any question, do not mark, especially when you are practicing something, do not mark answers randomly to every question, because sometimes you might get them right, sometimes you might get them wrong, but the problem arises if you get them right or get them wrong. If you get them wrong, your confidence takes a hit, because the other questions you might have solved properly and you would be getting good marks in those questions, but because you over attempted, you will essentially lose a lot of marks that you should have. Also, if you get a lot of them right, you are under this false sense of confidence that whatever you attempt is going to be right and you are very good at the section. But it might not really be the case. And jab final day aayega, whenever it would matter the most, there is always a chance that it might entirely collapse completely. So ye sari cheezein mat karna. Mark the answers only if you are extremely certain of the answers. Also, record your thought process. Now, this is something that I have been very vocal about. If you are not sure why your thought process is not again matching with the thought process of the paper setter, then you have to understand what your thought process is. Now it becomes very difficult for us to remember what exactly was our thought process when we attempted a particular question. So it's best if you can record yourself or talk slightly loudly to yourself when you're solving a particular question and try to convince yourself that the answer to this particular question is option B, because I think that something like this would have happened. तो ये अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो यू विल नो व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज, एंड उसको आप कंपेयर कर पाओगे विद द पेपर सेटर्स थॉट प्रोसेस। और जब ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली मैच करेंगी, देन यू विल सी योरसेल्फ गेटिंग बेटर एट द सेक्शन। सो हमेशा ये करते रहना। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर activity. Now, in terms of RCs, should you go ahead and select a particular RC or should you not go ahead and select a particular RC? इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं in total, 4 parameters that we will be looking at. And in terms of what is the what exactly are the bulbs that correspond to these 4 parameters. If you get a lot of green bulbs, definitely you should go ahead and solve that particular RC. And if you are seeing a lot of red bulbs, then you should not really go for that particular RC. Now, in terms of the first thing, I'm talking about the genre and the topic. Now, genre basically means that you will have topics from a lot of different areas. So, what all areas can we think about? We can think about something that involves the society. So, social topic हो सकता है. You can have technology वाला topic. You can have economy वाला topic. You can have environment वाला topic. You can have political, legal, entertainment, sports. ये कोई भी चीज में से आपको एक passage आ सकता है. Now, from a particular genre, there will be a lot of topics that will be there. So you might not really be very comfortable with science, let's say for example, or technology, let's say for example. But then again, there might be something which might be related to your graduation stream, or which might be something which you would have done in the past. तो अगर ऐसा कुछ सीन है ना, तो डेफिनेटली वो वाले आरसी के लिए जा सकते हो। तो सिर्फ जॉनर के हिसाब से मत सोचो, सिर्फ टॉपिक के हिसाब से मत सोचो, लुक एट इट एज अ कॉम्बिनेशन। If it's a favorite genre and it's a favorite topic of yours, brilliant, you go ahead and solve it. अगर आपको economics पसंद है, but passage के अंदर economics के अंदर कुछ बहुत ही abstract सा concept mention किया गया है, then you need not really go for that particular passage. So look at it as a mixture of the genre and the topic that exists. Second thing, in terms of complexity, बहुत सारे passages आपको CAT में ऐसे मिलेंगे, roughly 3 out of 4 passages every year, or at least 2 out of 4 passages every year will be such that you will be able to go through that entire passage in a linear manner. मतलब कहीं पे भी author अपने argument से deviate नहीं कर रहा या नहीं कर रही, everything is presented in a linear format. A premise has been given to you, फिर argument 1 बताया गया है, फिर argument 2 बताया गया है, and then finally there will be a conclusion to this entire topic. Now, this is generally the way in which RCs are presented to you.
और इन सम केसेस व्हाट विल हैपन इज यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। तो ये फैक्ट है, ये रिसर्च है, ये मेथोडोलॉजी यूज किया था, इसको इस साइंटिस्ट ने काउंटर किया, ऑल दोस थिंग्स विल बी गिवन टू यू वन आफ्टर द अदर। सो अगेन देयर इज अ लीनियर फ्लो दैट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, तो ये अगर करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है पैसेज के अंदर। वेयर एज इफ अ पैसेज इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, कुछ तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर सडनली द ऑथर सेज दैट ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, कुछ और होना चाहिए था, फिर और कुछ हो जाता है, एंड सडनली यू आर नॉट श्योर कि ये पैसेज जहां कहां पे रहा है। या फिर the same idea is presented from a lot of different perspectives and a lot of different things are happening in totality in that particular passage, तो you are going to get confused। तो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है, या तो आइडिया कॉम्प्लेक्स है या तो उसका एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर दोनों में से कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है ना, दैट विल काउंट एज अ रेड बल्ब फॉर मी। मैं डेफिनेटली उस पैसेज के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। So a lot of times so happens that there might be some passage on say materialism, or in terms of democracy, let's say for example, or colonialism, let's say for example। ये सारे जो concepts होते हैं जो थोड़ा सा tricky होते हैं, या जिसके अंदर बहुत ही difficult words यूज करके इनको और difficult बनाया जाता है, I'll definitely not go for those kind of passages। थर्ड थिंग इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कैट के अंदर जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज द पैसेजेस विल जनरली रेंज फ्रॉम 400, 500, 600, मैक्सिमम ऑफ 700 वर्ड्स के पैसेजेस होंगे। Considering an average reading speed of roughly 200 to 50 words per minute, it should not take you more than 3 minutes to read an entire cat passage। और काफी सारे पैसेजेस फ्रेंडली होते हैं, तो उससे भी कम टाइम में आपका पैसेज पढ़ के हो जाना चाहिए। एक रीडिंग तो डेफिनेटली आपकी उस पैसेज की हो जानी चाहिए। So that is basically what I mean in terms of length. If the passage seems very long to you, or if the passage is indeed very long in terms of the length of the passage, you can maybe skip it for the time being or give it a red bulb। तो ये थर्ड पैरामीटर हो गया। The fourth parameter are the questions। Now before 2018, if you ask me, I would have said that CAT के अंदर जो questions आते थे ना वो काफी straight forward आते थे। But from 2018, 19 and especially CAT 2020 से you will see that there are a lot of tricky questions that have started appearing। दो examples top of my mind, there will be questions that will have a triple negative, right? Which of the following, if false, will counter the author's position the most except, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे फॉल्स करना है, काउंटर करना है या एक्सेप्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो मैंने सिलेबस वीडियो में कवर की हुई है कि हाउ टू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, वो भी मैंने वहां पे कवर किया हुआ है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। तो वहां पे मैंने क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन कवर किया हुआ है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज अ ट्रिकी क्वेश्चन। तो वहां पे ये टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। The second type of questions that has been appearing over the last few years is which of the following set of words or sets of words, चार सेट दिए होंगे आपको, कौन से चार सेट्स ऑफ वर्ड्स में से एक सेट है जो पूरे का पूरा उस पैसेज को कैप्चर करता है इन टर्म्स ऑफ द फ्लो एंड इन टर्म्स ऑफ द पॉइंटर्स दैट आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर पैसेज। Now that is again a difficult question to tackle because the options are very close. You might not be able to figure out which word has been explicitly mentioned, which word has not been mentioned, what is the flow and so on and so forth। So ये दो question types तो definitely I can think of top of my mind जहां पे I can tell you that these questions will make the passage also difficult। तो अगर ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे questions दिखाई देते हैं, then I will strongly suggest you to put a red bulb in front of it, otherwise it's a green bulb। If there are basic questions that are there, what is the argument when, or what is the assumption that is implicit in a particular argument when the author says this, which of the following is analogous to the author's position, which of the following if true will strengthen, which of the following if true will weaken, ये सारे questions जो होते हैं, tone of the passage and so on and so forth, ये सारे questions are questions that you are expecting, right? but जो बहुत ही क्वेश्चन स्टेम जिनका बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, वियर्ड होता है ना, दोस क्वेश्चंस यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट। नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस केस? इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन टर्म्स ऑफ क्वांट एज वेल। इफ अ पैसेज शोज यू 4 bulbs or 3 green bulbs, then definitely go ahead and solve this particular passage। Similarly, if there are 2 green bulbs that you can see, but कुछ तो गड़बड़ है, right? Let's say for example, passage का लेंथ बहुत छोटा है एंड जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं, बट जो जॉनरा है या टॉपिक है या कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बहुत ज्यादा है आपके लिए, then you will not really go for those passages at the start, maybe at the end। एक बार आपका फर्स्ट राउंड हो जाए उसके बाद अगर टाइम बचेगा then you will go for these passages, but otherwise do not touch these passages। And finally, if there is some passage that has only one green bulb or that has more than one red bulbs, then definitely you have to let go of that particular passage। उसको घर पे आके बाद में सॉल्व कर लेना या कभी भी सॉल्व मत करना। इट्स परफेक्टली ओके टू लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज। इन टर्म्स ऑफ द वर्बल एबिलिटी पार्ट, वहां पे क्या करना है, तो वहां पे यू हैव टू फिगर आउट व्हाट द क्वेश्चन टाइप इज। तो क्वेश्चन टाइप जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये आपको सबसे पहले पता करना है।
तो अगर वो आपकी स्ट्रेंथ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सम पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद जंबल्ड पैराग्राफ्स, सो आई फॉर वन आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑड सेंटेंस आउट, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पैराग्राफ समरी। तो अगर ये दो क्वेश्चन टाइप्स होंगे, आई विल बी मोर प्रो टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। बट अगर मैं देखता हूं कि क्वेश्चन टाइप है फिलिंग द ब्लैंक्स, या मैं देखता हूं क्वेश्चन टाइप है जंबल्ड पैराग्राफ्स, देन आई माइट नॉट बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट सॉल्विंग दीज क्वेश्चन टाइप्स। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फर्स्ट चीज डिपेंड करती है। The second thing again we'll talk about complexity यहाँ पे। तो अगर जो समरी वाला पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, there are lot of random things that are going on and again it is some metaphysical, some physiological, some psychological, some economic concept which you might not be aware of completely, तो फिर उसको attempt करना does not make a lot of sense to you। तो ये दो स्केल पे मैं VA के क्वेश्चंस को रेट करूंगा। If I'm getting two green bulbs then I'll definitely go ahead and solve this। क्वेश्चन टाइप मेरी स्ट्रेंथ है और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है, डेफिनेटली दिस क्लासिफाइज एज एन इजियर क्वेश्चन, मेरे को इसको सॉल्व करना ही चाहिए। एंड इफ देर इज वन ग्रीन बल्ब दैट आई कैन सी देन डेफिनेटली आई विल मार्क इट फॉर रिव्यू। बट अगर दोनों के दोनों मेरे अगेंस्ट है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे वीकनेस वाले टॉपिक में से है एंड कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा है, आई वुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, आई विल ईदर स्किप इट इफ देयर आर ऑप्शंस इन्वॉल्व। एंड अगर वो टीटा क्वेश्चन है तो मैं कुछ तो रैंडमली गेस करके आगे निकल जाऊंगा। आई डेफिनेटली नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। Now, a lot of people have this question that should we attempt RC first or VA first or VA first then RC, क्या करना चाहिए या कुछ और ऑर्डर करना चाहिए जिसमें मैं RC VA के बीच में ऑल्टरनेट कर रहा हूं। Again, the answer is completely up to you. It is your preference. You are either a focused candidate or a non-monotonous candidate. दोनों में कोई नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई भी कॉनोटेशन नहीं है नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर preference that I'm talking about। focused है या non monotonous है। now some people are focused, they like to do one activity at a time and वो पूरा का पूरा complete कर देंगे, उसके बाद ही वो दूसरी activity start करेंगे। so I am someone like that, I would like to go through all RCs first because I think RC के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है in terms of time, और वो खत्म करके ही फिर मैं VA पे जाऊंगा। अगर मैं VA से स्टार्ट करूं, I want to go through all VA questions and then I will go for RCs। समटाइम्स ये चेंज होता है बट जनरली आई विल ट्राई टू डू इट इन दिस मैनर। मे बी आई विल डू 3 आरसीज एंड अगर मुझे लग रहा है मैं आरसी में बहुत टाइम पास कर रहा हूं देन आई माइट गो फॉर VA, क्योंकि मेरे को VA को सैक्रिफाइस नहीं करना है कंप्लीटली। बट मोस्टली आई वुड वांट टू अटेम्प्ट ऑल आरसीज इन वन। देयर आर सम पीपल जिनको आरसी कर करके ना वो बोर हो जाते हैं, राइट? सो वो नहीं करना है मुझे। अगर तो मैं क्या करूंगा, आई विल डू वन आरसी, आई माइट डू 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम VA, देन आई विल डू माय सेकंड आरसी 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम VA। तो वो भी कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सेम चीज सिंगल क्वेश्चंस आपको लास्ट में करने ज्यादा फास्ट पड़ेंगे या फिर आप पैसेजेस बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज दैट व्हेनेवर आई स्टार्ट सॉल्विंग सिंगल क्वेश्चंस ना, आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर मैं जंबल पैराग्राफ सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, अगर लास्ट में शायद मैं 1.5 मिनट्स में उसको साइकिल थ्रू करूं, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन इफ आई स्टार्ट विद द जंबल पैराग्राफ क्वेश्चन, आई नो दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड 3 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, and that is going to result in a disaster for me, and I don't want that to happen, and that's why I will always want to keep these questions towards the end, wherein I know that under pressure I will be able to cycle through these questions in 1.5 minutes each. Whereas if I'm doing RCs at the start, I'm more mindful of spending my time in chunks, and that's why I'll be more fast when it comes to solving RC earlier compared to solving VA earlier. Now you have to take a call based on your evidence that you will get on the basis of your performance at the mocks, and then you can decide कि VA पहले करना चाहिए कि RC पहले करना चाहिए। But always remember this thing, play to your strengths। If you know that your strength is VA, तो उसको बाद में करने की कोई जरूरत नहीं है। You can start with VA, finish it off, and then you can go to RCs. It's perfectly okay. And सबसे important चीज at the CAT, you have to remember that you have to be flexible, right? Sometimes it might so happen that you might get too difficult RC passages. Now, just because you are very good at RCs does not mean that you have to sit and solve at least one of those 2 RCs. It does not mean that. You will have to react in a better manner in that particular case. What you will have to do is, you will have to ensure that you are flexible enough. If the VA part seems easy to you, get done with the VA part. Do not leave anything to chance towards the end, and then have a look at the RC part. So that is one thing that you can do in this particular context. Now, some tips I have shared to improve this particular section, the performance in this particular section. So first thing, I have always been advocating this very strongly. Do not reread. If you have not understood something at the beginning, chances are very low that rereading it is going to create a tremendous improvement in your comprehension, right? So that will generally not going to happen. So go through the entire passage, read it quickly. I would suggest that you read the entire passage in 2 minutes. It's perfectly okay. And then if you have not understood something when you are reading the questions, you come back to the passage and read it again.
But spending a lot of time reading and rereading and then again going through the first paragraph because you seem to have forgotten something, it is not going to help you at all. It might create a lot of chaos in your head. You will feel angry with yourself. You will feel irritable, right? Because your brain is not focusing on the task that it has at hand, has on hand, right? So don't try to trouble your brain a lot. Just read it as you would be reading any novel. You will not be able to figure out the plot of the novel within one page of reading it. You will have to go through those 250, 300, 350 pages of that novel before you can figure out कि plot क्या था. Right? Same thing happens in terms of the RC as well. पूरा का पूरा passage जब तक नहीं पढ़ोगे आपको context समझ में नहीं आएगा. So make sure that you are reading it in one go. You are not rereading things. Second thing, if you are stuck between two options, again I have mentioned this earlier as well. Do not choose randomly. If you have something in your mind, put it on your rough sheet and just see when you're analyzing your test what would have happened if you had marked that particular answer and if your reasoning was correct. If you find your reasoning to be correct most of the time, you can go ahead and mark that option in your actual test as well. Then you cannot assume anything in VARs. A lot of people look at the second point and say that I'm stuck between two options, so 50% chance that I'm going to get it right. And that's why you'll attempt all 24 questions with the hope that you are going to get 12 correct and 12 wrong in most scenarios, which basically means that you are looking at a score of at least 24 marks. बट ये वीडियो देखने वालों में से कितने लोगों को कंसिस्टेंटली 24 मार्क्स मिलते हैं इन दी VARC सेक्शन एट एनी मॉक? The answer to that question is going to be a very low number, and that's why I can say with confidence that even though you might think दो ऑप्शन के बीच में चूज करना है तो 50% चांस है, it is not exactly 50%, it is much worse than that. Then don't solve the section just because you can. I mentioned it earlier. Just because there are 24 questions, you have 40 minutes, there are no visibly correct answers, does not mean that you go ahead and solve all the questions. Even if you're not sure of one question, let go of it. उसको जबरदस्ती solve करने की कोई जरूरत नहीं. Also, it's okay to let go. If you are not being able to figure out what an RC is trying to say or what a jumbled paragraph is trying to say, don't beat yourself up and let go of that particular question. It does not deserve to be solved during the test. Also, one hat tip for all of you. I have been training aspirants I have been interacting with aspirants for more than 15 years now. Formally training aspirants for more than 10 years now. And there is one thing that I've observed, which I'm sure you would have also observed. Whatever group you are a part of, whatever institute you are a part of, जो डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है ना, उस पे यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वांट क्वेश्चंस बीइंग डिस्कस्ड. मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म विल बी फ्रॉम क्वांट. वर्बल के अंदर किसी को डाउट्स ही नहीं होते. एंड आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग टू बिलीव दैट पीपल वुड नॉट हैव डाउट्स इन VARs. या तो यू आर नॉट टेकिंग VARC as seriously as you should be, or you don't think people are good enough to clarify your doubts, or you have not put in enough thought while marking the answer yourself. That's why you feel guilty asking people कि भाई इसका आंसर सही कैसे हो सकता है. ठीक है. So make sure that you are discussing VARC more than QA DLR, at least as much as QA and DLR, and I think you should be sorted by the end of the day. Because VARC जो होता है ना, वो perspectives के बारे में होता है. If you share perspectives, if you get to know what people are thinking when they solve something or write something down, you will end up enriching your knowledge. You will end up enriching your perspectives, and that will help you solve questions in a better manner. तो वहां पे आप बहुत सारी चीजों को देख के ही फिर आंसर मार्क करोगे. And that's how you will improve. You will not improve by reading a book or by solving 50 RCs. You will improve a lot by discussing those RCs that you would have solved. And also, one tip for all of you. You have to be a good reader. If you want to be a good manager / leader, you have to read outside of your CAT prep as well. तो सिर्फ CAT के लिए मैं RC solve कर रहा हूँ ये मत होने देना. Also read to improve your general knowledge, to improve your conversational skills, to improve your knowledge in terms of the various genres that exist. ये सब चीजों के लिए read करते रहना. But again, don't expect that reading Hindu editorials every day is going to translate into 50 marks in VARs. ऐसे नहीं होगा. Editorials पढ़ना is a different story. Solving questions is a different story. दोनों को mix नहीं करना चाहिए. Now, if you want to get a plan to crack CAT in 6 months, you can have a look at this video. I'll also be coming up with a video on how to crack CAT in 150 days over the next couple of days. So you can have a look at this video to understand the structure of your preparation, understand the format of the test, all the topics that are available, and so on. And 150 wala is mostly going to deal with the mental aspect of cracking the CAT. So look at both those videos, and I'm sure you will end up getting a good perspective in terms of what CAT looks like, feels like, and what it takes to crack the test.
Also, we have this initiative that is an ongoing one. It's called the daily drill, wherein what happens is we will share a test with you every day, which comprises of CAT level questions, past CAT questions, and so on. More questions you can solve, and then every evening at 8 p.m., what we will be doing is I'll be coming live for all of you, and I'll be solving all those questions that were a part of the test. And we have some good discussions post those tests, and there are different perspectives, there are different ways of solving that are discussed in these particular sessions. So do turn up for these sessions, and I'm sure it will benefit your CAT preparation in a large way. So make sure that you are with us. If you like the video, do consider liking this particular video. Give us a thumbs up. Comment below saying that you liked a particular aspect of this particular video. अगर आपको share करना है, do share it with your friends. Do share it with people whom you believe will benefit from this thing. Subscribe to our channel and do stay subscribed throughout your entire CAT journey. And I promise you that I'll make it worth your time. So all the best with your CAT preparation, and I'll see you again in some other video.